Hi guys, welcome to the second video podcast of the El Clasico Football Hub. I am Anand. And I'm Aditya, Pascal Barca. We are now down to match day 3 in La Liga. Quite a few interesting fixtures we have. Barcelona wala match I think is away to Rayo Vallecano, right? Correct. So let's start with Barcelona's fixture. Aditya, what do you think? I think Barcelona against Rayo last season was 2-1, if I remember, उनके home पर. Hmm. And Rayo का last season का position was 8th position. So I Right. don't Right. think they will be pushovers. I Hmm. think compared to ये जो last तीन matches हुए, one first match I discard क्योंकि it was two red cards. It was not a match for Barca, right? Not a match Hmm. that was testing Barca. Second Hmm. match it was Levante, still an easier Hmm. opponent. ये third match might be the first test for Barca to break against a comparatively defensively solid team. So Hmm. for me, Barca is going away to win the match, maybe with a Hmm. narrow margin. Uh, I think it will be like a 3-1 result. In an ideal scenario, this should what that is what Barca should target. At the Hmm. same time, if the defensive woes continue, which is a major problem for बारसा right now, अगर वो Hmm. कंटिन्यू होता है और बारसा अभी इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता है, कुंडे अगर मुझे पिच पे नहीं दिखा, देन इट माइट वेरी वेल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट. 3-2 90th मिनट में एंटर करेगा, बारसा विल हैव अ close shave, and we might still win, but it will be a close shave and probably not a good result coming out. But 3-1 Hmm. in a good scenario, 3-2 in a complex tricky scenario अगर कुंटे मुझे फील्ड पे नहीं दिखा तो. Do you think Barcelona will score a lot of goals against Rayo Vallecano? Like you also mentioned, right? They are defensively a little more solid than the teams Barcelona faced in the last two matches. So I think उस sense में do you think कि इतने goals कर पाएंगे 3 or 4? या सो चार तो नहीं करेंगे फॉर श्योर. Hmm. व्हाई आई एम सेइंग थ्री इज बिकॉज अभी फ्लिक ने रियलाइज किया हुआ है कि डिफेंस दे आर फिगरिंग इट आउट, राइट? सो Hmm. उनके इनहेरेंट टैक्टिक में होगा दैट गो आउट, अटैक, स्कोर गोल्स एंड गेट दैट कुशन, सो दैट तुम्हें डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को कवर अप कर पाओ. तो बारसा इज गोइंग टू Hmm. एंटर द फील्ड विद दैट मेंटालिटी एंड दे आर गोइंग टू गो ऑल इन ऑन द अटैक. And hence I Hmm. said three. It could very well be two, but the way I think Barca is going to approach this game makes me Hmm. think they will go for that four goal, three goal kind of a score line to have that, Hmm. just to have that cushion, right? And then players like Lewandowski are also slotting back in. So I think Hmm. Lewandowski के वापस आने से you get a better goal scoring chances than Ferran. Hmm. So Hmm. all in all factors combined, I think Barca should be well poised to score three goals. But yeah, I think the larger problem are the defensive problems that Barca is facing right Hmm. Hmm. I think what is also interesting to see is how Vallecano plans their attack. So we've been seeing in the last two games. अब थोड़ा teams La Liga की especially are now reacting to the offside trap. They are trying to now. adapt Correct, to that offside traps, है ना? They are trying to figure out ways ki how do we penetrate. Like you also mentioned in the last video, right? कि La Liga के अंदर teams are intelligent. ठीक है, तो correct. they always would adapt. Do you think in the last two matches as well, we saw Mallorca breaking through as well, and in the last match as well, थोड़ा बहुत problems दिख रही थी in terms of coordination for that high line offside trap, and also wings pe we saw कि a lot of runs were there. Do you think Rayo Vallecano would be thinking along those lines and would have some success penetrating that high line? They will, but आई थिंक रायो का जो मेन थ्रेट आता है वो उनके राइट विंग से आता है. उनका कोई प्लेयर है, इसी पेलाजो, इफ आई एम नॉट Hmm. रॉन्ग. इसी पेलाजो उनका बेस्ट प्लेयर है. ही Hmm. contributed 4 goals and 4 assists last season. So for a team Hmm. like Rayo, 8 goal assists is good. Plus he comes from the right wing attack, which is a good thing for Barcelona. Why? Hmm. क्योंकि right wing पे you still have Balde to defend. You still Hmm. have Rashford, not Rashford. You still have Rafinha who tracks Rafinha back. track You backs, yes. you still have Kubarsi on that side, right? So Hmm. it still gives Barcelona an edge there, and hence I am a little less worried about it.
had he been operating on the left side of the field, then मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन में रहता comparatively, because Hmm. that side exposes us to Araujo, right? Hmm. Not that Araujo is bad at one-on-one defending, no, but he's still adapting to the high line. He's still coming on with that intelligence of high line, so he's making Hmm. mistakes. तो तब मैं थोड़ा ज़्यादा worried होता. But given उनका best player who is a right winger is going to attack our left flank, and we have a better well defended left flank compared to right flank, so I will still go for Hmm. not consider Hmm. it that big a threat. सो बार्सिलोना ऑलवेज क्रिएट चांसेस. वो पिछली सीजन भी कर रही थी, इस सीजन भी दे हैव हिट द ग्राउंड रनिंग इन टर्म्स ऑफ अटैक, राइट? सो दे आर गोइंग टू क्रिएट चांसेस. One key difference, like you mentioned, Leva is back, right? Secondly, Hmm. I don't think Flick is going to experiment with Rashford on the left and Rafinha at cam again. I don't think that has worked quite well. So I think Rafinha is going to move back to his normal left wing, and I think Olmo is going to start. So I think उस sense में chances are going to be there. I think you're going to convert more chances. I can see Barcelona scoring 4 goals, but I also see क्योंकि teams are now adapting to that offside trap. I think एक गोल तो मार ही देगी रायो. Agree. I think एक गोल तो रायो मारेगी. वी विल स्कोर 3. 4 माइट थोड़ा मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, बट ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. आई विल टेक दैट वन एक्स्ट्रा गोल फॉर अस. The challenge or the important part about this match, however, is how Flick is operating Fermin Lopez. So last match mein, to make out us to give a statement that Casado is important for us, right? Because there were talks about Casado leaving for 30 million, right? So Right. to give that statement, he benched Gavi because Gavi should have operated maybe in that double flank, right? Double pivot. Uh, but he benched Gavi and started Casado just to give him that confidence that hey, तुम्हें stay करना है, right? But इस बार जो फरमीन के साथ जो ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं, विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ बारसा फैन, because Fermin is our boy. He's coming from that La Masia. He's the breed of La Masia, right? Comes with that passion for Barcelona, right? You cannot get दैट पैशन इन द मार्केट. ठीक है, बार्सिलोना के लिए वो ही ब्रीथ्स बार्सिलोना, राइट? बट देन चेल्सी का ऑफर है. चेल्सी इज गिविंग 50 मिलियंस इज व्हाट आई हैव हर्ड, राइट? प्लस वो उसे एक स्टार्टिंग स्पॉट दे रहे हैं टू स्टार्ट अलोंग साइड कोल पामर. मच बेटर सैलरीज दे रहे हैं बारसा में. फर्मीन इज एंडिंग व्हाट 2 to 4 मिलियंस में भी. वहां पे ही इज गेटिंग मच बेटर सैलरी. I think सो 10 million is what I heard. 10 मिलियन. सो Hmm. ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा जंप्स मिल रहे हैं उसे, राइट? Hmm. एंड बार्सिलोना इज एट अ पोजीशन जहां उन्हें बिजनेस करना है. दे आर नॉट एबल टू Hmm. रजिस्टर प्लेयर्स लाइक रूनी. दे आर नॉट एबल टू रजिस्टर देयर सेकंड चॉइस गोलकीपर एज वेल अभी तक, राइट? Hmm. हमारा स्मोकी अभी भी बेंच पे है, राइट? Hmm. नॉट इवन ऑन बेंच, राइट? Hmm. सो बारसा इज enticed by the offer, but 50 million for Fermin is such a bad deal, right? I cannot think किसी भी यूनिवर्स में तुम्हें फर्मीन को 60 मिलियन के नीचे बेचना चाहिए, राइट? इफ यू Hmm. वुड हैव हैड अ गुड बार्गेनिंग पावर, अगर तुम पहले वाले बारसा होते, व्हेन यू डोंट नीड टू सेल प्लेयर्स, देन मे बी इवन गो फॉर 70 मिलियंस, एंड क्लब्स लाइक पीएसजी वुड पे फॉर दैट, राइट? फॉर अ प्लेयर Hmm. लाइक फर्मीन. बट 50 मिलियन इज अ बैड डील. आई मीन just because हमारे finances खराब है. uh, but all in all, irrespective of the money we get, I think we should not sell Fermin. He's needed there. तुम्हारा ऑलमो पूरे टाइम इंजर्ड रहता है, तुम्हें ऐसा ऐसा पैशन वाला प्लेयर नहीं मिलेगा मार्केट में. दिस डील शुड नॉट गो थ्रू, शुड नॉट हैपन. आई जस्ट होप फ्लिक गिव्स दैट मैसेजिंग एज वेल और वो वहां पे फील्ड पे दिखे. इफ नॉट Hmm. बाय स्टार्टिंग फर्मीन, आई डोंट माइंड इफ फर्मीन स्टार्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है ही हैज दैट capability to reach or achieve that ceiling of almost in due time. Not अभी, but future में हो सकता है, right? But Hmm. at least sub हो गया है for me. At least that is something I would like to see on the pitch tomorrow. Hmm. A fair point, I think. But I'd ask you a question. So, इसमें, do you think in the current state that Barcelona is in, like you mentioned कि register भी करना है players, right? And Fermin ऐसी position पे खेलता है जहाँ जहाँ पे you can have players filling in. So Olmo can be there. अगर injured है, Rafinha के साथ already experiment चल रहा है. And we have also seen
वर्स्ट केस सिनारियो में पेड्री को भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पेड्री भी वो पोज़ीशन पे खेला हुआ है, राइट? डू यू थिंक you can get that 50-60 million from for Fermin and invest in a center back जो थोड़ा leadership वाली profile हो? Do you think that is the need of the hour, or would you still want to keep Fermin? Tricky. So I would want to keep Fermin in an ideal case. अभी वाले सिनेरियो के हिसाब से इवन इफ यू आर सेलिंग हिम नॉट एट 50 मिलियंस, नॉट एट 50 मिलियंस, उससे बेटर यू वेट फॉर इट, अगले साल रुक जाओ, तुम्हें 60 मिलियंस मिल जाएंगे. फरमीन गिव्स 15, फरमीन गिव 15 प्लस गोल कंट्रीब्यूशंस लास्ट सीजन कमिंग ऑफ Mm, बेंच. तो तुम्हें इसके mm, सूटर्स मिल जाएंगे. यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ मनी. कमिंग टू mm, डिफेंस पार्ट ऑफ आई थिंक वी नीड अ डिफेंडर. बट वो 60 मिलियन या 50 मिलियन जो हमें मिलेंगे वो हम पूरा डिफेंस में नहीं डाल सकते. पॉसिबली उसका 50% डाल पाएंगे गिवन हमारा. mm, द होल mm, पॉइंट इज की वेज बिल लेके यू नीड टू रजिस्टर 2 प्लेयर्स. आई डोंट थिंक mm, 20-25 मिलियन में देर आर प्लेयर्स बारसा इज बीइंग एसोसिएटेड विद, बट सम ऑफ देम आर यू नो coming up upcoming defenders, not that leader level defender like you got Inigo Martinez. ऐसे कोई class defenders के साथ बारसा लिंक नहीं हो रही है. They are getting linked with upcoming talents. I don't think we are missing upcoming talents right now. उससे better I would want to care for Christensen. I would want to mm, have Araujo out there. I can even play Eric Garcia at center back, right? And play mm, Kunde at right back. Now that Eric Garcia is flourishing at right back, I can have Kunde back at the center mm, back. He was a damn good center back, right? So while mm, Flick has asked for a defender, so of course Barca is trying for one, but mm. आई डोंट सी कि इसी सीजन एक एवरेज डिफेंडर लेकर यू कमिट टू दैट डिफेंडर rather than maybe try other avenues, other methodologies to register players. और फरमीन अगर तुम्हें बेचना ही है तो अगले साल गो फॉर इट, एंड गो फॉर इट विथ अ 60-70 मिलियन प्राइस टैग. But I wouldn't blame Fermin if he goes through uh, to this transfer. I think Chelsea अग्री. is on its way up, and वहाँ पे starting position भी guaranteed होगा उसके लिए, and you get a much better salary. I think गावी भी बहुत खुश होगा, उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश गावी होगी. फरमीन की लड़ाई चल रही Hmm. थी. हाँ, so I करेक्ट think करेक्ट. works out for Gavi as well. So I think wouldn't blame Fermin as well. No, I agree. I agree. I think good move for me. But as a Hmm. Barca fan, I would want him to stay. But yeah, good move for me. Okay, I think now let's switch to the other side of the world, right? What do you think, or how do you think Madrid is gonna torture Mallorca? So कितने I don't think. कितने गोल्स मारने वाले हो? So I कितने don't सेव्स think. करने वाले हो? So I don't think it's going to be that dominating from Madrid's perspective. I think Mallorca haven't had the best of starts in La Liga. फर्स्ट मैच बार्सिलोना के साथ हुआ, राइट? उसके अंदर 2 रेड कार्ड मिल गए, तो उसके बाद तो चांस ही नहीं था. सेकंड मैच वाज अगेंस्ट सेल्टा. अगेंस्ट सेल्टा आई थिंक यू वुड एक्सपेक्ट सेल्टा टू कम थ्रू, बट वो भी फिर उन्होंने ड्रॉ किया, राइट? तो आई थिंक अच्छा स्टार्ट नहीं है, बट आई विल ट्राई टू लुक एट मायोका ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लास्ट पूरा सीजन अगर मैं देखूं, you would associate Mayoka as a team who is very solid defensively, who is very rough and gives in those tackles, interceptions, right? अगर उनके कुछ stats भी देखोगे, I think they were third in terms of interceptions and second in terms of long clearance. So उनका थोड़ा way of playing, you can imagine कि थोड़ा rough होगा, right? एंड आई थिंक लास्ट जो हमारा फिक्सचर हुआ था उसमें भी हम शायद 2-1 जीते थे, तो इट वाज स्टिल अ केजी अफेयर. आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ मैच दिस टाइम अराउंड एज वेल. मड्रिड भी फिगर आउट कर रहा है कुछ कुछ चीज़ें, एंड मायोका मुझे लगता है उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी ऐसी रहती है कि हम पूरे टाइम डिफेंड करने वाले हैं, एंड विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन द चांसेस थ्रू क्रॉसेस. आई थिंक दे रैंक्ड फर्स्ट in terms of accurate crosses in La Liga last season. So I think they are going to capitalize on crosses. Having said that, I think Madrid this time around has a better defense to clear off those crosses. I think Tchouameni is there, Dean is there, है ना, मिलिटाओ और रूडिगर हैं. इस बार फुल बैक्स जो लास्ट टाइम की प्रॉब्लम थी मेजर्स लास्ट सीजन की, फ्रान गार्सिया और लूकस वास्केस.
तो इस सीजन वो भी नहीं है, तो करेरास है ना, यू वुड एक्सपेक्ट ट्रेंड टू स्टार्ट एज वेल. सो आई थिंक in terms of defending crosses, I think we would be better suited. So I don't think Mallorca is going to score at the Bernabeu, but I also don't think Madrid is going to score 3-4 goals. So I'll go with a 2-0 victory for Madrid. आई थिंक आई एग्री दैट इस सीजन मैड्रिड को वो टीम्स ट्रबल करेंगी जो थोड़ी सेंटर से खेलती हैं, राइट, जो सेंटर से पेनिट्रेट करती हैं. Hmm. इवन इन द लास्ट मैच दैट वी सॉ, जो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आई थी, वो भी वो भी Hmm. सेंटर के प्ले से आई थी. द स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, द गैप्स दैट केम इन वर exploited in that central zone. I don't Hmm. think teams who are average wing play teams, right? Because they are not no Barca, they are no PSG. Hmm. उनका कोई क्रॉसेस तो तुम्हें ऐसे डेंजर नहीं होने वाला है, राइट? सो आई Hmm. थिंक average mediocre crosses वाली teams are not going to trouble Madrid much. And Hmm. Mallorca से I don't think uh, you will get goals as such. They are not that attacking mindset team. However, Hmm. as a Barca fan, not as a football fan, as a Barca fan, the best result out of a Mallorca match would be a 2-3 match injury to any of your maybe a midfielder or a defender. Hmm. Just a 2-3 match. As a football कितना fan, मैं ये बुरा नहीं है चाहता यार हूँ तू, कि कितना बुरा कि इंसान कोई है यार तू. कोई प्लेयर ज्यादा इंजर्ड रहे, इतना हो जाए कि बस 2-3 मैच बेचारा ना खेले और वापस आ जाए. सो दैट लेवल ऑफ इंजरी आई वुड वांट कि Mallorca वाले मैच से, सो बिकॉज आई वुड नॉट माइंड दिस एक्चुअली. इसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है, तो इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं जाएगा प्लेयर, चलेगा भाई नहीं, मैं जो मुझे. 2-3 मैचेस बोला ना, मैं मैड्रिड के मैचेस सिग्निफाई कर रहा था. But अच्छा. yeah, last to last time when we played Mallorca, they played like a brute game against us. Uh, फरहान टोरस वगैरह को धक्का मार रहे थे. देवर प्लेइंग रफीनिया को धक्का मार रहे थे. आई थिंक वो बहुत ज्यादा रेड कार्ड येलो कार्ड वाला सागा चला था उनके साथ. हम्म. सो दे आर हम्म. वेरी ब्रूट. थोड़ा सा दे गो टू दैट डार्क आर्ट्स वाले थिंग्स. सो आई हम्म. थिंक आई वुड वांट देम टू डू दैट. एंड मे बी जस्ट 1 or 2 players अगर इंजर्ड करके बाहर आए just for 2-3 match as a football fan. So I एज अ guess फुटबॉल that फैन. will be as a because I'm a football fan इसलिए 2-3 matches. अगर मैं नहीं होता तो और matches में भी, but all in all that would be a success for me. प्लस देयर इज दिस हिस्ट्री विद विनीशियस एज वेल ना. सो विनीशियस की भी मायोका प्लेयर्स के साथ हिस्ट्री रही है, थोड़ा वो आर्ग्यूमेंट्स की भी, वो गंदे गंदे टैकल भी मारते हैं उसको. सो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ वेरी रफ sort of match, but I still expect Madrid to still win. I think what would be more interesting for me would be the formation that Xabi uses. तो लास्ट वाले मैच में क्या हुआ था, टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द हाफ, सेकंड हाफ, चैबी ने क्या किया था, जस्ट टू पुट दैट टारगेट इन द बॉक्स, गोंजालो गार्सिया को रखा था फील्ड पे while keeping Mbappe as well, and Mbappe was playing more of a second striker or a cam position behind the striker, and there were two wingers. So I think Chabi just might use a similar approach क्योंकि Mayoka also plays in a lower block, अच्छे से defend करते हैं. They generally like to play with a 5-man defense as well, so it's even difficult to penetrate, right? So मुझे ऐसा feeling आ रहा है कि Chabi might just play with four pure attackers, Mbappe in a more cam position, Gonzalo Garcia as a more target, and two wingers could be Vinicius and maybe Franco, right? But yeah, I think that would be something interesting to see. What's your take on this? I think in terms of tactics, uh, I feel this time at least you will not start with Rodrigo for sure. ठीक है? Hmm. Hmm. You will start with Vinicius. However, this time जो combination बन के आएगा, it will be left Vinicius and right Franco, and you Hmm. will attack with Mbappe at the center, right? The good thing that I am going to watch out for will be the will be how Franco and Vinicius gel in with each other, because now Hmm. Vinicius will not only uh, provide to Mbappe, जो कि पहले सिर्फ एम्बापे को Hmm. प्रोवाइड करता था. राइट में देयर वाज रोड्रिगो, राइट, बट दैट इज Hmm. नॉट हिज नेचुरल पोजीशन, नेचुरल इंस्टिंक्टिव स्लाइडिंग स्ट्राइकर नहीं था वो. बट अब Hmm. इन फ्रैंको यू हैव गॉट दैट person who can receive the ball, right, and then can bury it from the right side. So for me, Hmm. the entire important thing against Mallorca to watch out for will be the feed-ins from the Vinicius, and
मोर इम्पोर्टेंटली जाबे इस चीज को कैसे हैंडल करने वाला है, बिकॉज Hmm. do you feed in at the far end of the right side, right, of the Hmm. goalpost, where your receiver right now is going to be Franco, or do you feed in towards more towards the center where you will expect uh, Mbappe to come in, make those runs and receive the ball? So I think ये जो front final third का जो combination होने वाला है, Hmm. that is very going to be very interesting for me. I think apart from that, everything else might be a carry forward of what we saw in the previous match against Osasuna, I believe. Hmm. क्योंकि they won't want to solve for things which are not broken, right? Hmm. Arda Right. Güler had a great game. Xiaomeni was a baller out there, right? Why would you want to not ask them to continue to do what they did? लाइक Hmm. वाई, राइट? क्योंकि तुम्हें एक केमिस्ट्री बनानी है, तुम्हें एक स्टाइल ऑफ प्ले बनाना है, दैट वी प्ले लाइक दिस, वेयर आर्डा दिस इज योर रोल, शाओमेनी यू डिड वेल, दिस इज योर रोल, राइट? नाउ दैट Hmm. यू हैव डिफाइंड दैट रोल, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट, राइट? Hmm. आई थिंक वन मोर चेंज जो हो सकता है, दैट कुड बी कारवाहाल नॉट स्टार्टिंग Right. एंड ट्रेंड स्टार्टिंग, ठीक है? बिकॉज कारवाहाल वॉज गिवन अ चांस. Did he play बहुत अच्छा, like at the top of his game? No, right? Hmm. But now this is the advantage that you get with Trent, कि तुम अब ट्रेंट को ला सकते हो. एजिंग कार्वाहाल है, he did not have a good game, अब तुम उसे बेंच कर सकते हो, and now you Hmm. have Trent coming in. So I think that will be one change in the defense that will happen. And net I don't expect things to change much in terms of lineup, or maybe defense में थोड़ा सा everyone is evolving, तो वहां पे थोड़ा और काम कंटिन्यू होगा. But interesting thing will, or everything will transpire in the final third for me. Hmm. I think interesting point you mentioned on Carvajal. तो I also agree कि Carvajal शायद नहीं खेलेगा. I think Trent would start क्योंकि एक फैक्टर वो भी है कि he is coming out of a long term injury, so you would not start him for consecutively 2 matches. तो अभी I think Xabi is going to take it easier for Carvajal. Another thing I think Militao I think for me would be starting क्योंकि रूडिगर को भी बहुत ज़्यादा प्लेइंग टाइम अभी नहीं मिला है तो I think and Militao performed better in the first match than Rudiger in the second match. I think Militao is going to get that nudge over Rodrigo. Other than that, I also agree. Regular starters. I think just that important thing that I'm looking at is Gonzalo Garcia. I think might have a good play, good role in this match.